बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 with database 19C in Windows 10 इंशाअल्लाह। Quickly आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2, ORDS 20.3 और database 19C को इंस्टॉल किया जाता है Windows 10 में जल्दी से। So first we are going to extract Oracle database 19.3, ORDS 20.3 and Apex 20.2 in a folder where we want to install them. While extracting Oracle database 19C and ORDS 20.3, we will create a separate folder with the name DB and ORDS respectively. So it will extract all the files within that specific folder. Oracle database 19C, ORDS 20.3 और Apex 20.2 को हम उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, और Oracle database 19C और ORDS 20.3 को एक्सट्रैक्ट करते हुए हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम से, ताकि ये उस स्पेसिफिक उस मखसूस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करें। Extraction has done. Extraction हो चुकी है। Now we run database setup with administrator rights. अब हम database का setup चलाएंगे administrator के rights के साथ। Create and configure a single instance database. Hit next button. Create and configure single instance database करेंगे, next का बटन दबाएंगे। Desktop class, hit next button. Desktop class रहेगा, next का बटन दबा दीजिए। Use Windows built-in account, hit next button. You can use other option as well. Use Windows built-in account करेंगे और next का बटन दबाएंगे। आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes. Provide global database name, password and confirm password from your choice. ग्लोबल डेटाबेस नेम दे दीजिए और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए अपनी मर्जी से। अनचेक क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस, अनचेक कर दीजिए क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। हिट नेक्स्ट बटन। नाउ हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। डेटाबेस इंस्टॉलेशन एज कंप्लीटेड, डेटाबेस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। हिट क्लोज बटन, क्लोज का बटन दबा दीजिए। Open SQL Plus, connect with sysdba and check SGA maximum size by running show parameter SGA, and if it is less than 3000 MB then increase it by running the command which is coming. SQL Plus खोलें, कनेक्ट हो जाए sysdba से और SGA maximum size पता करें शो पैरामीटर SGA की कमांड चला के, और अगर 3000 MB से कम हो तो उसको बढ़ाएं। इट इज लेस देन 3000 MB, 3000 MB से कम है
system alter. Now shut down database by running shut immediate command. आप shut down कर दीजिए database को shut immediate की command पर लाके. Exit this SQL Plus. इस SQL Plus से बाहर आ जाए. Open new SQL Plus. Connect with sysdba and start database by running start command. नया SQL Plus खोलें दोबारा. कनेक्ट हो sysdba से और डेटाबेस को स्टार्ट करें स्टार्टअप की कमांड चला के. Now open command prompt and reach where apex folder is available. command prompt खोलें और वहाँ से जहाँ apex का फोल्डर अवेलेबल है कनेक्ट हो जाए sysdba से और apex को इंस्टॉल करें. Connect with sysdba and install apex. Oracle Apex installation has completed. Oracle Apex की installation complete हो चुकी है. Now within this command अब हम ये command चलाएंगे. User will be admin. User admin होगा. Provide password, provide email and password from your choice. Email और password आप अपनी मर्जी से दे दीजिए. Now we run this command. अब हम ये command चलाएंगे. Provide password, password दे दीजिए. Now exit this as command prompt. Exit करते हैं इस command prompt को. Open new command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. नया administrator के राइट साथ और वहाँ जाएं जहाँ ORDS का फोल्डर अवेलेबल है. और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएं. और रन दिस कमांड. प्रोवाइड अ कॉन्फ़िगरेशन पाथ. कॉन्फ़िगरेशन पाथ दे दीजिए. प्रेस एंटर. एंटर का बटन दबा दीजिए. एंटर. माई पोर्ट इज 1521. आप अपनी पोर्ट बता दीजिए क्या है. मेरी पोर्ट 1521 है. बिकॉज योर पोर्ट विल बी डिफरेंट. आपकी पोर्ट डिफरेंट हो सकती है. ऑप्शन विल बी 2. ऑप्शन 2 होगा. प्रेस एंटर. एंटर का बटन दबा दीजिए. डिफाइन योर सेट. अपनी सेट बता दीजिए. योर सेट विल बी डिफरेंट. माई सेट इज दिस. आपकी सेट मुख्तलिफ हो सकती है. एंटर. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम से होगा. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दीजिए. एंटर. 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 प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए. एंटर. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए. Enter. Now copy image folder from the Apex installation folder
कॉपी कर लें इमेज के फोल्डर को एपेक्स के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से एंड पेस्ट इट हियर और यहाँ चिस्पा कर दें। एंटर। Provide Apex static resource location till image folder. The path will be till image folder. Apex static resource location provide करें। path जो है वो image के folder तक होगा। Enter का बटन दबा दीजिए। Press enter. Enter. Define your desired port or leave it as it is. अपने desired port बता दीजिए या एज इट इज या ऐसे ही रहने दीजिए। एंटर। Oracle REST डाटा सर्विसेज इनिशियलाइज लिखा आ गया है। अब हम एपेक्स को चला सकते हैं। नाउ वी कैन रन एपेक्स। माई पोर्ट इज 19222। One nine double two. One nine double two. Come to SQL Plus. मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। SQL Plus में आया और ये कमांड चलाया and run this command. It is mandatory to unlock this user. ये ज़रूरी होता है कि हम इस यूज़र को अनलॉक करें। यूज़र ऑल्टर हम हेयर इधर आएंगे Ctrl+C दबाएंगे। Ctrl+C will use to stop ORDS. Ctrl+C इस्तेमाल होता है इसको स्टॉप करने के लिए ORDS को। The account is locked. The account is locked. Now Apex available. Oracle Apex has installed. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.